Hello students, today we are going to study the further topics of the chapter Let's Play with Water. In the last class we have discussed about the property of solubility and how we can dissolve a substance faster in water. Okay, so now let's start. So first there is an activity given in your book and this activity consists of you have to bring a bucket. Okay, उस bucket को आप पानी से आधा भर दीजिए and after that collect some items like piece of chalk, pen, eraser, piece of paper, matchstick, sponge, key, whatever you can are able to collect, just collect that types of objects. और आप क्या करिए, check that bucket of water in center, एक एक करके सारे आइटम्स उसमें डालिए, जो आइटम्स उसमें फ्लोट कर जाए and make a column. जैसे इसमें टेबल देखी हुई है ना, things that sink in water immediately. Okay, that's the next table is things that float on the surface of water, things that float initially but sink later. Okay, so this is a table given in your book, so you have to write your observation. जो भी आपने देखा कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है, that is कौन सा ऑब्जेक्ट डूब गया पानी में, कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, that is on the surface of water पे है, और कौन जो पहले तो फ्लोट कर रहा था फिर बाद में सिंक कर गया. So you have to complete this table. Now स्टूडेंट्स एक बात बताइए, कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा? एक्चुअली डिपेंड्स कि वो ऑब्जेक्ट लाइटर है या हैवी है देन वाटर. अगर वो ऑब्जेक्ट वाटर से हैवी होगा तो इट विल डेफिनेटली सिंक, वो पानी में डूब जाएगा. एंड इफ दैट ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन वाटर देन दैट ऑब्जेक्ट विल मूव अप. Okay, so as you can see, this is a boat, and I think rainy seasons where all you'll make this boat of paper and used to just put in water. So ये float करती थी ना, it used to move also. Okay, it used to move also. So this boat made up of paper used to float in water because it is lighter than water. Similarly, there are some objects which are lighter than water which will be floating on the water, and if the object is heavier than water then it will be sink. Okay, so the heading that we are going to study is when does an object float and when does it sink. अब एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या फ्लोट कर सकता है या सिंक कर सकता है, या कब वो फ्लोट करेगा कब वो सिंक करेगा. ओके, सो सिमिलरली यू हैव टू टेक सिंपल वन थिंग ओनली, यू हैव टू टेक अ बकेट ऑफ you have to take this okay, you have to take the bucket which is filled with half with water. Okay, now एक बॉल पेन लीजिए आपको. Okay, fitted with its cap, that is a ball pen लेना है आपको जिसकी कैप भी लगी हुई हो. Okay, now drop this ball pen into the water. Okay, अब आप क्या देखेंगे, अगर ये पेन हैवी होगा दिस अमाउंट ऑफ वाटर से तो ये क्या करेगा, ये सिंक कर जाएगा. और अगर ये लाइटर होगा सो इट विल कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है, ना इसकी कैप रिमूव करिए एंड अगेन डू दिस एंड पुट दिस वाटर कैन. चेक अगेन कि क्या वो फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है. एंड दिस इज द एक्टिविटी जो आप अपने घर पे परफॉर्म करेंगे. ओके, now take out that pen again. Okay, now remove the refill, जिसके पेन के अंदर रिफिल होती है उससे रिमूव करिए एंड पुट इट इन वाटर. ओके, सो आपको क्या लगता है जो पेन रिफिल के बिना फ्लोट कर रहा है या नहीं कर रहा है? सो यू विल बी राइटिंग दैट ऑल्सो. फिर रिफिल डालिए, क्या रिफिल फ्लोट कर रही है नहीं कर रही है. कैप अलग से डालिए, क्या कैप फ्लोट कर रहा है नहीं कर रहा है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग. जैसे तो हमने अलग अलग तरह से पेन्स को ड्रॉप कर दिया, अब पूरा पेन लीजिए वापस से. ना ड्रॉप दैट पेन
स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा डालिए. क्या वो फ्लोट करेगा या नहीं करेगा? यू हैव टू राइट दैट इज इट विल फ्लोट और सिंक. सिमिलरली पेन को टेढ़ा करके डालिए. ओके, पेन को हॉरिजॉन्टल डालिए, पेन को वर्टिकल डालिए, स्ट्रेट डालिए, इंक्लाइन डालिए, और ट्राई टू फाइंड आउट किस पोजीशन में पेन सिंक करता है और किस पोजीशन में पेन फ्लोट करता है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गिविंग, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑल्सो, जिससे आप पता लगा सकते हैं बच्चा कि कौन सी चीज फ्लोट करती है, कौन सी चीज सिंक करती है. ओके, now I'll be discussing another activity with you. Okay, and this is an also very interesting activity. You have to take a glass of water. Okay, you have to take a glass of water and fill it with approximately 3/4 with okay 3/4 with water. Now take one whole lemon, okay, of medium size. Just take one whole lemon, and this is a lemon. Okay, now put this lemon into this glass of water. ये क्या है आपका? Glass of water. Put this lemon here. So what you will be seeing that this lemon sinks. अगर ये लेमन हैवी होगा ना तो ये सिंक कर जाएगा. ओके, क्लियर? सो लेमन ठीक है. नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग, नाउ add some pinches of salt in it. Okay, you will be adding some salt in it. Keep on adding this pinches of salt around like 3 to 4 times. So what you will be seeing then, students, you know, this lemon which was earlier sinked, now it will change like this. इस condition के बाद ये हो जाएगा. This is a glass of water and this is your glass and it's half filled with, now salt is in it. This is a glass of salt solution, or you can say salt with water with salt. Okay, so this lemon which was earlier sinks, now this lemon will be float. वाई बच्चा कि इसमें लेमन सिंक किया, इसमें लेमन फ्लोट किया? बिकॉज इस केस में, इफ वी टॉक अबाउट दिस केस 1, इस केस 1 में वाटर इज heavier than or you can say lemon is heavier than water. तो इस केस में आपका लेमन सिंक कर गया क्यों? हैवी था वाटर से. इस केस में, दैट इज इन द सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या हुआ? जब हमने सॉल्ट ऐड कर दिया ना, तो सॉल्ट ऐड करने की वजह से आपका जो लेमन था, या यू कैन से लेमन
लाइटर देन वाटर। तो इस वजह से आपका लेमन फ्लोट करने लग गया। ओके, सो डू यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट दिस एक्टिविटीज टेल यू? प्लीज, आप भी बहुत इजी एक्टिविटी है। लेमन आप मम्मा से ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए पानी का एंड जस्ट आस्क फॉर द सॉल्ट। सो आप बहुत इजीली अपने घर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो you can be your small miniature scientist at your homes only. Okay, so try to do this activities at your homes. Okay, now students, this is when an object floats and when that object sink. Now एक ही ऑब्जेक्ट है भाई, लेमन ही था, पेन ही था, बट हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस निकाले, डिफरेंट सिनेरियोज निकाले जहां वो फ्लोट कर सकते हैं या जहां वो सिंक कर सकते हैं. Okay, now we'll be discussing another heading that is called when what is up, what is down. Okay, so let me drop this heading and then we'll be discussing about this heading, that is what is up, what is down. Okay, that's why this chapter is called bacha playing with water, because you have so many different types of activity that you are going to do by yourself. So yeah, you're playing with water. What is up and what is down? Now students, what you have to do, you have to take a transparent bottle. एक ग्लास की ट्रांसपेरेंट बॉटल लीजिए या प्लास्टिक की, किसी की भी ले सकते हैं आप. ओके, नाउ फिल इट विथ वाटर, हाफ पानी से भर दीजिए एंड यू नो ऐड 8 to 10 drops ऑफ ऑयल इन इट. क्या ऐड करना है आपको? ऑयल. सो देन क्लोज इट टाइटली और फिर उस बॉटल को शेक कीजिए अच्छे से, एकदम एक फुल रिगरस अपनी हेड स्ट्रेंथ के साथ उसे शेक करिए. सो व्हाट यू विल बी सीइंग दैट this bottle, you'll be seeing that this water and this oil get mixed it up. Now leave that bottle for some time. कुछ टाइम उस बॉटल को रख दीजिए कोने में. सो आप क्या देखेंगे थोड़े टाइम बाद कि जो ऑयल था it will start floating on the upside. Okay, आपके ऊपर आ जाएगा. That will happen like this. कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? Suppose this is the bottle. Now कुछ टाइम बाद क्या होगा? जो ऑयल था ना बच्चा, वो ऑयल ऊपर पानी के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेगा. So here will be oil and here will be water, और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं. Okay? So this happens in this activity. So as you can clearly see कि भाई oil water में dissolve नहीं होता है. Okay? और हम oil को कहाँ find करेंगे? ऊपर find करेंगे. Okay? Now students, you know this also happens. आपकी मम्मा जब खाना बनाती है, she used to make this oil, put it oil, और फिर उसमें मसालास डालती है, and then she used to cook that मसाला. और जब वो बहुत ज्यादा कुक हो जाएगा तो वो जो ऑयल होगा ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, बिकॉज दिस ऑयल इज लाइटर देन दैट वेजिटेबल्स एंड ऑल. ओके, सो दिस हैपेंस. ओके, नाउ आर वी क्लियर ऑन दिस? सो दिस इज अबाउट व्हाट इज अप एंड व्हाट इज डाउन. नाउ स्टूडेंट्स, एक दिन क्या हुआ, वन डे दिस मिल्कमैन केम टू दिस सविता's हाउस. And तो सविता की मामा ने कहा कि सविता, go bring the milk from the milkman. So when this milkman was measuring the milk, so Savita saw that and she saw that कि milkman वाले जो भैया थे ना, हमारे दूध वाले जो भैया, he is measuring this milk in liter. So उन्होंने मिल्क किस में मेजर किया? He is measured the milk. Milk is measured in liter. ओके, so उसने देखा कि भाई दूध को किस में कर रहे हैं? लीटर में मेजर कर रहे हैं. सो शी गेट क्यूरियस आउट ऑफ इट कि भाई क्यों हम इसे मिल्क को लीटर में मेजर कर रहे हैं. हम तो जब मैं सो मिल्कमैन से उसने पूछा, दूध वाले भैया से, अंकल जब भी हम हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमारे जो शॉपकीपर भैया हैं, ही यूज्ड टू
weigh the items in kg. मतलब जब भी हम like sugar, rice, एक्सेट्रा टाइप्स के आइटम लेते हैं तो वो उसे किससे में वे करते हैं? दे वे इन केजी और kilograms. So I can also write this kilogram. Okay. So she was like कि आप इसे लीटर में क्यों मेजर कर रहे हैं? तो इसने मिल्कमैन भैया ने, दैट इज दूध वाले भैया ने बताया कि बच्चे जो भी लिक्विड क्वांटिटीज होती हैं हम उन्हें लीटर में मेजर करते हैं, और जो भी हमारी सॉलिड या अदर आइटम्स होते हैं हम उन्हें केजी में मेजर करते हैं. तो ये माय पॉइंट कि भाई जो भी लिक्विड थिंग्स होंगी, यू नो लाइक ऑयल, वाटर, मिल्क, जूस, कैरोसिन, ये सारे के सारे लीटर में मेजर होते हैं, and solid things and other things measured in kg. Okay, so students, this was the thing I want to discuss with you. Now, you know, student, you will be doing one thing for me. Okay, just bring a bottle of water or a packet of milk, or you can pick a pack of oil also. ठीक है. So what you will be doing, आप क्या देखेंगे बच्चा, ये जो पैकेट होता है मिल्क का या वाटर का या दिस ऑयल का, उसके पीछे क्या होगा? कंटेनर के पीछे कुछ इंफॉर्मेशन होती है. वो इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या बताती है? वो वेट बताएगी, वो प्राइस बताएगी, और वो बताएगी डेट ऑफ पैकेजिंग ऑल्सो. सो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लानी है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है. ओके, सो यू नो आजकल तो बच्चा बॉटल्स, हम लोग कभी बाहर जाते हैं, सपोज वी हैवंट कैरी द वाटर फ्रॉम आवर होम्स, सो आपके मम्मी पापा यूज टू ब्रिंग दिस सील्ड बॉटल ऑफ वाटर ना. व्हाट इज दैट सील्ड वाटर ऑफ बॉटल? वो भी लीटर में ही मेजर होती है. सो ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके मम्मी पापा जब वो बॉटल लाई वो 1 लीटर की है या कितनी ml की है. सो ट्राई टू फाइंड आउट दिस ऑल्सो. ओके, this is one thing that I want to discuss you. Now students, do you know that said कि friendship should be like water and milk. पता है आपको ऐसे क्यों कहते हैं कि water और milk की जैसे दोस्ती होनी चाहिए? क्योंकि अगर this is the glass, okay, अगर इस ग्लास में मैं I'll add milk and I add water, so यहाँ ये जो लिक्विड होगा, you will be not be able to identify कि लिक्विड क्या है और मिल्क क्या है. ओके, इस वजह से हम कहते हैं कि फ्रेंडशिप शुड बी लाइक मिल्क एंड वाटर. You will not be able to identify one from the other. Okay. Now students, there are 2 activities given in your books regarding this. You have to take 3-4 empty utensils of different measurements. Okay, 3-4 different टाइप के आप अपनी मम्मा से मांग के बर्तन ले लीजिए. Now 1 लीटर की कोई भी बॉटल ले लीजिए आप. ठीक है. Now what you have to do, वो 1 लीटर की बॉटल से वो डिफरेंट टाइप्स को यूटेंसिल्स भर के देखिए. देखिए कि मान लीजिए आपके एक यूटेंसिल्स में वो जो बॉटल है आपकी 1 लीटर की वो 3 आई, तो इसका मतलब उस यूटेंसिल की कैपेसिटी कितनी है? 3 लीटर्स. ऐसे ही मान लीजिए एक बॉटल है जिसमें आपकी हाफ बॉटल है, तो उसकी कितनी कैपेसिटी है? ½ लीटर. So that's how you will be finding out the, I have to write the name of the utensil. Suppose आपके पास कप है, एक ग्लास है, एक पैन है. ठीक है. So you have like सॉस पैन है एक. So these are the different types of utensils, और उसमें आप लीटर्स लिखिए, आप कितना लीटर्स उसमें वाटर आया है. ठीक है. दिस इज वन एक्टिविटी जो आपको कर सकते हैं. सो ट्राई टू फाइंड आउट एंड ट्राई टू गेट अ गुड नॉलेज और गेट एन आइडिया कि किस यूटेंसिल्स और कितने साइज पे कितना लीटर ऑफ पानी हम रख सकते हैं या कितना उसकी कैपेसिटी है. नेक्स्ट इज यू हैव टू फिल यू नो अ बकेट. ओके, बाल्टी लीजिए, उसे फिल करिए हाफ विद वाटर एंड पुट एन ऑल पिन. ऑल पिन होते हैं ना जो पेपर्स के लिए होते हैं. पुट दैट ऑल पिन इन द वाटर. Now observe what will happen. Now put that all pin on a piece of newspaper and place it carefully on the surface of water. Now watch it for some time. You know what will you be observing? That the piece.
So what happens, this piece of paper जो आपने उस बकेट के ऊपर रखा था, कुछ टाइम तक तो फ्लोट कर रहा था, जैसे जैसे वो वेट होने लगा ना, तो पीस ऑफ पेपर गीला हो गया. सो वो जो ऑल पेन था, इट ऑल्सो सिंक्ड. Okay. Now students, this was the one activity that is given in your book. Okay. Now students, different things can be grouped differently. If on the basis of shape, we can classify things like shape जैसे classification. Let me rub this, and then we'll be writing the next heading, that is, it's not a heading, it's general terms that is given in your book. Okay. Classification of different things. Okay. Now students, मान लीजिए हम on the basis classify करना चाहते हैं उन्हें on the basis of first shape. So we of course we classify objects according to the basis of shape, like कि वो square shape का है या circular shape का है, triangular shape का है. So we classify ना, like आपकी जो clock होती है, it is mostly circular in shape, क्या वो square shape में है या rectangular shape में है. And like this, your mobile phones that your parents have, are they in rectangular shape or in a square shape? So you can easily identify or classify objects on the basis of shape. Then you can classify different objects on the basis of taste also. Taste के कैसे? Laddu is sweet in taste, right? And this pani puri is salt. It's like has this bitter sour taste. Then this amla. Okay, amla is a fruit and it's bitter in taste. So that's how you can find out different things, and you will classify different things on the basis of taste. Like sweet hai, salty hai, bitter hai, sour hai. So you can classify different objects also. Spicy hai. Okay. So next you can also classify an object on the basis of color. Of course we can classify this this whiteboard is white in color. I have wear this bottle green color. You are wearing, suppose some of you are wearing red color, blue color, orange color. So we can classify different things. Like apple को हम classify करते हैं. So अगर जैसे ही मैंने अभी एप्पल बोला तो बच्चा यू इमेजिन दैट रेड कलर एप्पल. अभी मैं मैंगो बोलूंगी तो यू विल बी इमेजिनिंग अ मैंगो ऑफ येलो कलर, राइट? ऐसे ही अगर मैं यू ग्रेप्स बोलूंगी, सो यू विल बी, सम ऑफ यू विल बी इमेजिनिंग ब्लैक कलर ग्रेप्स एंड सम ऑफ यू विल बी इमेजिनिंग ग्रीन कलर ग्रेप्स. So it's an imagination also. So we can also classify different objects on the basis of colors also. So ये हम imagine करते हैं. Next is nature. भाई उनका नेचर कैसा है, आर दे एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, different टाइप्स के. हम लोग हमारे फ्रेंड्स के लिए बोलते हैं ना, शी हैव दिस एरोगेंट नेचर, ये इसका बहुत स्वीट नेचर है, एंड शी हैज दिस वेरी हेल्पफुल नेचर. सो हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑल्सो. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साउंड ऑल्सो वी क्लासीफाई different objects. Okay, different objects can be classified on the basis of sound also. And also on the basis of size also we can classify different objects. Small होते हैं, big होते हैं. Small objects like 5 rupee coin, 10 rupee coin. और अगर मैं big things की बात करूँ तो like yes, a stone, a big heavy stone, or you can say elephant. So these are the things that I'm discussing with you, big and small. So this is the things that we have discussed in this chapter. I'm going to give you some questions regarding this. Okay. Okay. So let's start with some questions. The first question or first thing that you all have to do, we have discussed approximately 1, 2, 3, like 4, 5 activities here. So you will be performing all the 5 activities. Perform 5. Perform all the activities by your
self. Okay. When will the pen float or sink? Okay. Now the next question that I'm giving you is, take a pack of milk and find all the details that are given on the back. Next question is, which things are measured in liter? Okay. Next question that we are going to study is, or that I'm going to give you, is regarding classify apple, orange, banana, mango, grapes, and coconut on the basis of color, taste, and size. Okay, so this is the question for you. Please try to do this question by yourself or with the help of your parents. Now we'll be discussing further topics.